Hello students, our today's topic is importance of management. First point of importance of management is management helps achieving group goals. Management is required not for itself but for achieving the goals of the organization. Management have to work to achieve the goal of organization. So for achieving the goal of the organization, what management have to do? Management have to direct or guide people in a right direction. Now the second one is management increases efficiency. The aim of a manager is to reduce cost and increase productivity through better planning, organizing, directing, staffing and controlling the activities of the organization. So as we all know, we do work for achieving organizational goal. So for achieving the organizational goal, we have to work in a proper manner and we have to produce goods in a efficient manner. We have to reduce the cost and increase the productivity. By doing that only we can earn profit and we can achieve organizational goal. Now the third point is management creates a dynamic organization. All organizations have to function in an environment which is constantly changing. It is generally seen that individuals in an organization resist change as it often means moving from a familiar. सो हमें जब भी हम लोग काम करते हैं मैनेजमेंट के अंदर तो वी हैव टू चेंज द एनवायरनमेंट, वी हैव टू चेंज द टेक्नोलॉजीज़. हमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ पर एक ही वे में काम करते रहेंगे. इफ विल डू दैट वी कांट अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. द फोर्थ वन इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. A manager motivates and leads his team in such a manner that individual members are able to achieve personal goals while contributing to the overall organization's objective. The main target of management is to achieve organizational goal, but with that they have to take care of individuals also, that they will achieve their goals as well, because if they will not get any benefit of the work, so they won't be taking any interest and they won't work properly. So management have to work for achieving individuals, or we can say personal objectives also. Management helps in the development of the society. An organization has multiple objectives to serve the purpose of the different groups that constitute it. In the process of fulfilling all these, management helps in the development of the organization and through that it helps in the development of society. तो हम लोग किस तरह से हेल्प करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके मैनेजमेंट किस वे में वर्क करता है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए. So what they do, it helps to provide good quality products and services, creates environment opportunities, adopt new technology for the greater goods of the people and lead the path towards growth and development. तो वो लोग क्या करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को. क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, तो वो सोसाइटी के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा. सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट and management as a science, management as a profession. First we will start with management as a science. Management has a systematic body of knowledge. It has its own theory and principles that have developed over a period of time. As we all know, science is a systematized body of knowledge. इसके अंदर जो भी काम होता है एक सिस्टमेटिक मैनर में होता है. सो मैनेजमेंट में भी सेम स्किल्स के साथ काम होता है. वी हैव टू वर्क इन अ प्रॉपर वे, वी हैव टू अरेंज ईच एंड एवरीथिंग इन अ सिस्टमेटिक मैनर. द सेकेंड थिंग इज इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. सो जैसे साइंस के अंदर वी डू एक्सपेरिमेंट, वी ट्राई डिफरेंट थिंग्स. केमिकल लैब में केमिस्ट्री लैब में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हम डिफरेंट केमिकल्स को मिक्स करके देखते हैं कि उससे क्या होता है. वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी हम लोग नए आइडियाज़ लाते हैं, नए वे से काम करने की कोशिश करते हैं, सो दैट हमारा काम जो है वो ज़्यादा प्रॉपरली हो सके. सो मैनेजमेंट जो है वो एज अ साइंस ही वर्क करता है, बिकॉज
साइंस में भी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, एंड हियर ऑल्सो वी डू वर्क इन अ सिस्टमेटिक मैनर और इन अ प्रॉपर वे. Secondly, science is also based on experimentation, and here we also do experiments. Now, management as an art. A successful manager practices the art of management in the day-to-day job of managing an enterprise based on study, observation, and experience. There is a lot of literature available in various areas of management like marketing, finance, and human resources, which the manager has to specialize in. So, मैनेजमेंट के अंदर हम लोग डे टू डे ऑब्जर्वेशन करते हैं, एंड वी हैव टू नोटिस वेयर वी आर लैकिंग सो दैट वी कैन वर्क अकॉर्डिंगली. So when we notice the things, we have to do practice on it. We have to become more creative. We have to adopt new technologies, new ideas, so that we can work properly. Now, second one is we have to study different literatures, because we have to improve our human resources, production, and sales, etc. So when we work for that, we have to do study of many literatures. We have to gain the knowledge related to those things. In management, we need those people who are very creative, who love to do innovation, who try to do new things, who want to adopt new technology so that organization can achieve its goal, and they can adjust in a changing environment, because we all know we have to adopt new technology so that we can improve our goods and services. We can provide good quality products to company. Now, management as a profession. It won't meet exact criteria of profession, but some features are related to profession. First, all over the world there is marked growth in management as a discipline. If we are working in an organization as a manager, so we should be डिसिप्लिन. हमको जो भी काम करना है वो एक डिसिप्लिन के अंदर रह के करना है, ताकि हम दूसरों को समझा सकें. द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स स्टार्टेड गोल. दिस मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड सर्विस फॉर हॉस्पिटल. मैनेजमेंट का मेन वर्क जो होता है वो होता है हमारी गोल के लिए काम करना. इट मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और इट मे बी प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज टू हॉस्पिटल और एनीवेयर एल्स. सो मैनेजमेंट जो है वो वर्क करता है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए. हाउएवर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू एंड इज फास्ट चेंजिंग. जो गोल है हमारा वो आजकल सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं रहा है. इट इज़ चेंजिंग बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड good quality of goods and services, as well as we have to think about society and all the employees who are working in that organization. So management is work as an art, as in science, and not exactly as a profession, but some criteria match to profession also. Thank you.